We have removed many unnecessary contents from RBI circular itself. These are 3 MCQs. In recent last 3-4 exams, IBPS has shown many unpredictability in their exam pattern. Rate cuts help banks to grow, helps MSMEs to grow, helps economies to grow. रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है, मतलब 0.25% का जो कट है, वो इकोनॉमी में एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करता है, जिससे कि लोन सस्ते हो जाते हैं, बैंक्स ग्रो करते हैं, बैंक्स के भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन 0% से भी कम चल रहा है। जो प्राइस राइज हो रहा था वो राइज नहीं, कम हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिवली आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि खर्चा सबका बढ़ ही रहा है, बट हाँ, जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में डिक्रीज हुआ है। वी आर फेसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू द हाई टैरिफ इन यूएसए. If you are someone who is looking for multiple banking lateral entry opportunities, including SBI CBO, Bank of Maharashtra, BOB, RRB Scale 2, Scale 3, and all other bank Scale 2, Scale 3 exams, then we have a dedicated banking lateral entry yearly pass for all of you. So don't just watch these success sessions, also be part of it. And a full year batch with an extensive reading, you can crack these exams. हर साल बहुत सारे बैंकिंग लेटरल एंट्रीज के अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट बैंक में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, देन ये आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है, सबसे सही समय है। तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए विथ आवर एक्सक्लूसिव ईयरली पास। And let me announce before we start, RRB Ready Reckoner Part 1 released. Then monthly banking top MCQs, only 250 MCQs added. If you got time, you have read month wise. Now we have given you only the top MCQs which we think is important for exam. So all other non-important MCQs were removed. Then we have only added 150 RBI circular MCQs of last 2 years. We have removed many unnecessary contents from RBI circular itself. These are 3 MCQs. So this is roughly 1200 to 1300 MCQs we have already given to you. By tomorrow morning, I am going to add 1500 to 1700 top static banking MCQs. Okay, so I am working hard because this in recent last 3-4 exams, IBPS has shown many unpredictability in their exam pattern, but thanks to our research team, that the strike rate of Knowledgist is more than 95%. So we are working really hard for IBPS RRB pattern, because in RRB they ask anything as a question, any number can be a question. So we are working on it. So stay assured. But 1500 MCQs, whatever we have given to you, please read in a rapid fire manner. The more time I'm taking, the more research, and I'm eliminating the more unnecessary questions. Okay. And today we are going to discuss our banking in 2 parts. Our class in 2 parts. One is the important MPC, and then we are going to discuss the top MCQs based on the recent exam patterns and probable pattern. Okay, the recent MPC came. It was not a surprise, but it was a big relief. If you are invested in stock markets, you might be knowing that there was a rally in stock market. It's a good response because rate cuts help banks to grow, helps MSMEs to grow, helps economies to grow. Because when rates are cut, 25 basis point rate was cut, right? The 25 basis point rate cut has a significant result in what you say, butterfly effect in economy, because the loans get cheaper. When the loans get cheaper, more and more MSMEs go and aggressively borrow money for growth, and subsequently they add to the growth, they add to the job creation, and at the same time individuals also borrow more to spend more. That boosts the economy in as a result. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इस बार बहुत चर्चा में था। 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहे थे। 25 बेसिस पॉइंट कट का आरबीआई के कार्ड में था, बट 8.2% जीडीपी ग्रोथ के डाटा आने के बाद थोड़ा मुश्किल में था, बट फिर भी आरबीआई ने इसको कट किया। और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है, मतलब
0.25% का जो कट है वो इकोनॉमी में एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करता है, जिससे कि लोन सस्ते हो जाते हैं, बैंक्स ग्रो करते हैं, बैंक्स के भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम एमएसएमईज भी ज्यादा बोरो करते हैं, कॉर्पोरेट्स भी ज्यादा बोरो करते हैं, जिससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में, ये है 58th मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिपोर्ट। और आपको पता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है एमपीसी में, ये 58th एमपीसी है। उर्जित पटेल कमिटी ने रेकमेंड किया था 2016 में। इन 2016 द उर्जित पटेल कमिटी हैज रेकमेंडेड the implementation of MPC monetary policy committee that has to be met in every 2 months। वो रिपोर्ट अपने 2 महीने में देते हैं, जिसका पहला मुद्दा है द फास्ट टारगेट ऑफ MPC is to target inflation from in a band of 2% to 6%। but the headache now is we are now running into a phase of deflation, मतलब इन्फ्लेशन 0% से भी कम चल रहा है। जो प्राइस राइज हो रहा था वो राइज नहीं, कम हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिवली आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि खर्चा सबका बढ़ ही रहा है, बट हाँ जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में डिक्रीज हुआ है। तो इन्फ्लेशन अभी बहुत कम है। जो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 6% के बैंड को क्रॉस कर गया था, अभी वो कम चल रहा है। ठीक है, उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन ही कहते हैं। तो ये जो मीटिंग था ये 58th मीटिंग था। ठीक है, इट वाज हेडेड बाय नागेश कुमार, श्री सौगात भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता, श्री इंद्रनील भट्टाचार्य, ये 5 लोग ज्वाइन किए थे। और छठवां आदमी कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, हु वाज द 6th पर्सन, क्योंकि 6 पर्सन का कमिटी होता है। तो यहाँ पे हमने 5 नाम क्यों दिया, छठा नाम क्यों नहीं दिया? वाई आई मेंशन 5 नेम्स हियर, बिकॉज एमपीसी meeting is attended by 6 persons. Who is the 6th person? Name him. MPC reviewed macroeconomic and financial conditions. MPC unanimously reduced the policy repo rate at 5.25%, means everybody in the committee has voted to reduce the repo rate, 6 of them. And the 6th one is you have started, yes, Mr. Sanjay Malhotra। आप यही गलती मत करिए, आप संजय माल्होत्रा लिख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है, बट व्हेन आस्क्ड इन इंटरव्यूज ऑलवेज मेंशन मिस्टर। अगर उनको कोई डॉक्टरेट का उपाधि मिला है वो भी आपको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें इंटरव्यू में देखा जाता है, आपके पास कॉटेसी कितना है। ठीक है, ये बात हम और आप में चलता है, बट व्हेन यू गो टू इंटरव्यू में एक छोटे छोटे चीजों से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, अगर आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो शायद आप बैंक के मैनेजमेंट को भी रेस्पेक्ट नहीं देंगे पीठ पीछे। तो यही यही सब चीजों से इंटरव्यू के स्कोर इधर से उधर होते हैं। मिस्टर श्री संजय माल्होत्रा, अजय रेड्डी ने और हार्ड कर दिया, व्हेन यू यूज मिस्टर नो नीड टू मेंशन श्री। थैंक यू अजय, बट इट्स ओके, वेरी गुड। यस, श्री संजय सर, बिल्कुल, अनंत वारीवाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू। सो व्हेन यू आर एट नॉलेजिस्ट वी हैव, मतलब हमारा एक पेडिग्री होता है। we people at Knowledgist, all of you, you and us, we have a pedigree। we so banking, मतलब बैंकिंग हम करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, with a dignity in a dignified manner, right? So anyway, so unanimously means everyone voted for the reduction of repo rate, right? SDF rate 5%, MSF rate 5.5, एंड द स्टैंस इज न्यूट्रल। मतलब एमपीसी ना तो डविस है, ना तो हॉकिस है, ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिडक्शन करना चाहता है या फिर एग्रेसिवली बढ़ाना चाहता है। तो स्टैंस जो है न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये सब सिनारियो है, ये सब इंटरव्यूज के लिए चलता है, बट आपके कंटेंट के लिए दिया है, नॉट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लोबल इन्फ्लेशन इज ऑन इवन, इंडिया का इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यूएस डॉलर का प्राइस के मुकाबले रूपी के प्राइस में बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है। दैट इज ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया होने वाला है, बिकॉज करंट वी आर फेसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू दी हाई टैरिफ इन यूएसए। तो 90 रुपीज के आसपास रूपी जा चुका है, रूपी इज नाउ होवरिंग अराउंड 90 रुपीज, and RBI is not supporting it. RBI is allowing the market to determine the price of rupee, right? So that was the major reason। हाँ, ये जीडीपी के नंबर एग्जाम में आ सकता है, जीडीपी नंबर विल कम इन एग्जाम। इंडिया's रियल जीडीपी grew by 8.2%, right? From real GDP, when you minus the deflator, it becomes the nominal GDP। ठीक है,
तो and gross value added rose by 8.1%. The nominal GDP was lesser than real GDP, but we will discuss about real GDP in Q2 Q2 में इंडिया का GDP ग्रोथ दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है. Growth was supported by strong domestic demand and demand despite global uncertainties. और इंडिया में तो रेट कट हुआ ही था जीएसटी का. ठीक है. लोअर क्रूड प्राइस, ये सब चीजें हैं, इंटरव्यू के लिए जरूरी है, ये सब जानना आपको नहीं है. रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इज नाउ एट 7.3%. ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिए. फॉर 25-26 द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इन March 31, 2026, द ग्रोथ इज 7.3. Q2 वी रीच 8.2. बस इतना ही एग्जाम के लिए याद रखिए. Q3 expected at 7%, Q4 is expected at 6.5%. Okay, in Q1 next financial year, that means April to June, it is going to be 6.7%, and July to September it is going to be 6.8%. The MPC reduced the policy repo rate in its latest meeting to what? चलिए इमीडिएट आंसर करिए. हर कोई पार्टिसिपेट करिए ताकि प्रैक्टिस रहे, इसको बार बार देखना ना पड़े. दिया चक्रवर्ती वेरी गुड. PS स्वप्निल वर्मा वेरी गुड. अभी तो हमने पढ़ा है. इट इज 5.25%. What was the main reason behind the sharper than expected decline in headline inflation? Why the CPI inflation was so low in October 2025? It is correction in food prices. Core inflation excluding gold in October moderated to gold to price rise or price increase, that depends upon the market, that depends upon the geopolitics, that even depends upon the speculation of investors. तो इसीलिए उसको हम कोर इन्फ्लेशन में कैटेगराइज नहीं करेंगे. तो उसके अलावा गोल्ड के अलावा किस प्राइस रेंज में था? मनीष खंडेलवाल, यू आर राइट. नवीन, यू आर राइट. Yes, it is nothing but 2.6%. Which factor is not mentioned as supporting domestic economic activity? इनमें से कौन सा जीएसटी रियलाइजेशन? अच्छा, मैंने आंसर दे दिया है, फिर भी ठीक है. जीएसटी रेशनलाइजेशन था जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा था. फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेल्दी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट. इस बार Q2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे गए हैं सारे कॉर्पोरेट्स के. ठीक है, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट हुआ है. तो बट एलिवेटेड इन्फ्लेशन, इस बार तो इन्फ्लेशन कम था, सो इट इज नॉट एलिवेटेड वन. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 25-26 इज प्रिडिक्टेड एट. चलिए इसका आंसर करिए, क्विक सक्सेशन में करिए. इट इज 7.3%. एट 7.3%. वेल डन गाइस, वेल डन.